मेरे को अपनी माँ की बड़ी बातें याद आती हैं क्योंकि बहुत अक्लमंद थी, पढ़ी लिखी नहीं, 80 साल का पीपल के नीचे गर्मी में बैठ के अपना कुर्ता फाड़ रहा था, फिर कुर्ता सी रहा था, फिर फाड़ रहा था, फिर सी रहा था। Why don't we go and quit and go to Silicon Valley? You be the CTO, आप CTO बन जाओ, मैं CEO बन जाऊंगा, हम पैसा रेज करेंगे। क्या हुआ कि 1992 में I was working for IBM Research Division. We have heard a lot about you. Can you improve our paper mill? I always call it the power of regret. वो एक बाइट रेगुलर चल रहा था कि डेटा एनालिटिक्स कंपनी तो बनानी है यार जाने से पहले। होल प्रोसेस इज कि 10 साल बाद उनकी दे विल बी वर्थलेस। एक जो कि पैशनेट हैं, दे वांट टू चेंज द वर्ल्ड, दे वांट टू कम अप विद न्यू आइडियाज, न्यू बिजनेस वगैरह। एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप। दैट वाज अ वेरी बिग रिग्रेट फॉर मी एंड आई एम ट्राइंग टू फिक्स दैट रिग्रेट बाय राइटिंग अ बुक नाउ। कामयाबी तक जाने वाले रास्ते कभी सीधे नहीं होते, पर कामयाब होने के बाद सभी रास्ते सीधे लगते हैं। और आज हमारे साथ एक ऐसे ही कामयाब शख्स हैं, आलोक अग्रवाल। हेलो एंड वेलकम टू लाइफ अराउंड ब्लू ग्रे ब्लैक। वी हैव Alok Aggarwal with us today, who is the founder of eValueServe and now he's running a data analytics company, Scry Analytics. Alok, welcome to our show. Thank you. Dhanyawad. Alok, if you can share your story from eValueServe days to Scry Analytics, how things have been evolved so far, what were the challenges at eValueServe level and what are the challenges you are facing at Scry level? So actually the story is slightly more interesting. It goes beyond before eValueServe. क्या हुआ कि 1992 में I was working for IBM Research Division. I did my PhD in machine learning algorithms AI from Hopkins in 1984, started working for IBM Research Division. उनके साथ 16 साल काम किया. So 1992 में 91 सितंबर में actually एक CEO पेपर मिल का आया हमारे पास, पोर्टलैंड मेन से, which is about 400 miles north of New York City. वो कहता है हमसे कि we have heard a lot about you, can you improve our paper mill? So we have no clue about paper mills. तो वहाँ पे जाके समझे हम कि भाई पेपर मिल, पेपर कैसे बनता है वगैरह। इतनी ठंड होती है वहां पे, 3 महीने लगाए आके, कोई ओपन सोर्स एल्गोरिदम्स नहीं थी। सो वो हमने खुद जेनेटिक एल्गोरिदम्स, एआई एल्गोरिदम्स मेन फ्रेम पे करी, बट वी इम्प्रूव्ड हिज पेपर मिल बाय 1.5%। सो बीइंग अ कमोडिटी, पेपर बिल्कुल कमोडिटी है, $600 million की मिल, वी इम्प्रूव्ड इट बाय 1.5%, $9 million उसकी आई मीन प्रॉफिट मार्जिन में। सो ही बॉट इट. And in fact, they ran it for 25 years. I became very good friends with the CTO, John King, और उन्होंने 2017 में अपनी पेपर मिल एक नॉर्वेजियन कंपनी को बेची, and he was telling me till then they were running it. What happened is we became quite well known in IBM, outside also. We got quite a few awards. We started selling in many other places. और उससे मेरे को थोड़ा मतलब बेचने में, and I'll come to my life otherwise, कि उसमें मेरे को बेचने में, entrepreneurship में मजा आने लगा. So what was happening was that the salespeople in IBM were selling hardware, and we were trying to sell very high-end software. We were selling AI-based system, genetic algorithms-based system. So मैं और जो मेरा वो था colleague Sesh Murthy, happens to be an Indian also, we were selling around. We sold 2 other projects, but then we realized that we were not only building it but selling it. So I went to Sesh and said, "Ki Sesh, why don't we go and quit and go to Silicon Valley? You be the CTO. आप CTO बन जाओ, मैं CEO बन जाऊंगा, हम पैसा रेज करेंगे और हम CEO को हायर करेंगे और फिर से लिखेंगे एल्गोरिथम्स। कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लेने की जरूरत नहीं है, हम खुद फिर से लिखेंगे, सब कुछ है तो दिमाग में ही." सो सेश ने बड़ा इंटरेस्टिंग आंसर दिया जो कि मेरे को आज तक याद है, एंड दैट इज इन सम सेंस द जेनेसिस ऑफ स्क्राई एनालिटिक्स. उसने कहा, बॉस तुम्हारी वाइफ तो मेडिकल डॉक्टर है, वो तो खाना घर ले आएगी, मेरी वाइफ भरतनाट्यम डांसर है, टीचर है न्यूयॉर्क में, मेरे को घर पे खाना लाना पड़ेगा, तुम्हारे 2 बच्चे हैं, मेरे 3 बच्चे हैं, मैं नहीं जा रहा हूँ. So this was 1995 and this was an interesting thing. I should have myself left this time and I should have basically come to Silicon Valley, become the CTO, found a COO and CEO and started the company. But anyway, that didn't happen. I became the director of strategy. 2 साल strategy करा IBM research में, 3 साल में IBM India research lab लगाई.
फिर बनाई, I became the founder of IBM India Research Lab, grew it to 30 PhDs, 30 masters, and then met Mark Wollenweider, जिसकी अपनी interesting कहानी है, and then we started Evaluaserve. But I had that particular regret, and I always call it the power of regret. जब आपके regret हो तो दो वे से आप handle कर सकते हो, या तो उसके बारे में सोच के दुखी हो सकते हो, या सोच सकते हो कि यार ये regret है, मेरे को मरने से पहले on my deathbed I should have no regrets. So that is one of the things I wanted to do, and that was the reason. हालांकि Evaluaserve was doing fairly well. That was one of the reasons I wanted to go back to AI with open source algorithms, Moore's law, and everything doing well. And how I started Scry Analytics. वो एक bug bite regular चल रहा था कि data analytics company तो बनानी है यार जाने से पहले. हाँ, मतलब ये कह लो कि यार ये जो भाई think of it this way कि उस टाइम तो एल्गोरिथम्स भी इतनी ज्यादा सोफिस्टिकेटेड नहीं थी, हार्डवेयर भी नहीं था, हम लोगों ने मेन फ्रेम में बनाई. आई मीन तब भी हम इतने सक्सेसफुल हो गए कि उन्होंने 25 साल कंपनी यूज करी, 1.5% हम उनका वो बढ़ा रहे हैं. तो देयर इज समथिंग बिहाइंड इट. सो ये डेटा एनालिटिक्स कह लो, डेटा एआई कह लो, कंपनी, प्रोडक्ट कंपनी, सर्विसेज कंपनी का वो बड़ी इच्छा थी. एंड बिकॉज देयर वाज अ रिग्रेट आई वांटेड टू फुलफिल दैट ड्रीम, एंड दैट इज हाउ इट ऑल स्टार्टेड. Alok, जब Evaluaserve आपने स्टार्ट किया और Scry Analytics, I think it's been over a decade, the gap from the founding year of Evaluaserve and founding year of the Scry Analytics. What difference have you felt in talent and maybe different type of people, skill set? कुछ आपको different लग रहा है अभी कि उस वक्त लोग अलग थे, आज लोग अलग हैं? So है भी और नहीं भी है. So I think one difference is, of course, hardware is much cheaper. So उस टाइम हमें I mean $1 million में से $10 lakh में से $1.5 lakh सिर्फ हार्डवेयर के लिए लगाना पड़ा. इस बार ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं लगाना पड़ा, because we could go to AWS to buy hardware or rent hardware, or to Google Cloud or Amazon or Microsoft Azure. जो लोगों में था कि पहले when we started Evaluaserve in December 2000, January 2001, until 2006, actually the market was very good. We were able to hire very good people. Then banks came, foreign banks, and the foreign banks started hiring a lot of people. And we first felt a lot of pressure on attrition and on people. Job hopping began, in my view, around 2006, 2007 timeframe in Evaluaserve. Now, Evaluaserve is not into IT, as you can see. It is MBAs, it will be accountants and so on. So we had begun to feel that kind of a pressure of job hopping in 2006, 2007 timeframe. Although the IT companies were not finding that pressure. Then, of course, recession happened. The pressure became slightly less. अब ये pressure बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, not only in IT but in other places. Two reasons. One is that people now want to hire only the best people. So as you probably know कि काफी engineering colleges जो कि autonomous थे और जो कि काफी fee charge करते थे, they were not producing good students. Many of them have closed down. So you have already a shortage of supply. People can't say that I have a bachelor's in computer science or electrical engineering easily. Second problem that has happened is mainly the VCs and PEs coming. They have already saturated the US market. So वो काफी पैसा, China तो आप जानते ही हैं आजकल US China से खुश नहीं है. People don't want to invest in China after Alibaba and other places, other similar companies. So उन्होंने काफी इंडिया में पैसा डालना शुरू किया. About $50 billion has gone into India. And क्या होता है कि when you get a money from the VC also says कि भाई अब इसे use करो. So वैसे use करो या उसे जलाओ पैसे को, मतलब बीड़ी बना के या cigarette बना के, whatever, it's a different story. So what happens is people begin to, they're under pressure कि भाई I have to make a team of 50 people. They begin to give pretty much any salary to the person to hire. So the job hopping has gone onto a different level. And मैं actually काफी concerned हूँ, worried हूँ कि this job hopping can actually destroy India, IT industry in India. Because right now, I mean, people used to say कि भाई आपकी culture अच्छी है तो लोग छोड़ के नहीं जाएंगे.
अब तो कल्चर की बात छोड़ो, आपने 5 लोगों को ऑफर दिया, उन्होंने खूब आपसे नेगोशिएट किया, एंड नन ऑफ देम शो अप ऑन द डे ऑफ ज्वाइनिंग, उसमें आपकी कल्चर क्या करेगी? वो तो इसका मतलब सिंपल है कि ऑल देयर इंटरेस्टेड इन इज द नेक्स्ट रूपी और नेक्स्ट 1 लाख ऑफ रुपीज और व्हाटएवर. It's bad for the employers, it's bad for the employees also, because हर 2.5 साल में एम्प्लॉय छोड़ के चला जाता है. Attrition is about 40%. I don't care what people say, but that's what it is right now in India, which means an average person lives in a company for 2.5 years. अब वो लास्ट 3 महीने तो उसका नोटिस पीरियड है, उसमें वो ऐसे काम नहीं करेगा. पहले 3 महीने में वो जाके दूसरी कंपनी में ज्वाइन करेगा, उसमें उसे समझना पड़ेगा कि क्या करना है. सो इफेक्टिवली 2 साल का टोटल वो जो उसका काम है, वो 2 साल 2.5 साल में से 2 साल का उसका काम है. एंड देन ही विल गो एंड फाइंड अनदर जॉब. सो ही इज नॉट लर्निंग और शी इज नॉट लर्निंग मच. एंड एम्प्लॉयर्स आर आल्सो वरीड कि भाई मेरे को पता है कि 2.5 साल में छोड़ के चला जाएगा, मेरे को इसमें से जितना काम निकाल सकता हूँ मैं उसमें निकालूंगा. So employees are not getting trained. What will happen in the whole process is कि 10 साल बाद उनकी they will be worthless. क्योंकि उनको, I mean, usually people say by after 45 you saturate out. The way it is going in India, my feeling is after 35 people will saturate out. उनकी ना तो सैलरी बढ़ेगी और ना उनकी वैल्यू बढ़ेगी, because they've been over the from 25 to 35 or 22 to 35 they change 4 or 5 jobs, and in the whole process they haven't learned much. And learning is a very important aspect because the world is changing very, very fast. So whether it is machine learning or human learning, learning is the ultimate aspect that we have to take care of. I do agree, Alok, startup बहुत ही फैंसी ग्लैमरस वर्ड हो गया है इंडिया में, और फाउंडर लिखना बहुत एलीट क्लास लगता है सभी को. बट स्टार्टअप वर्ल्ड के पीछे, इसके ग्लैमर के पीछे बहुत स्ट्रगल है. मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि अगर किसी ने आज अपनी डेटा एनालिटिक्स कंपनी स्टार्ट करनी है, नाउ लुकिंग एट द टैलेंट क्रंच इन इंडिया, एंड इट इज नॉट इजी फॉर अ न्यूबी टू सेट अप अ डेटा एनालिटिक्स कंपनी, डू यू हैव सम सजेशंस फॉर दोज पीपल हु वांट टू सेट अप देयर ओन एनालिटिक्स कंपनी एंड दे आर नॉट एबल टू फाइंड द राइट टैलेंट? वो कैसे अपना बिजनेस को ग्रो करें, या वो करें ही नहीं, बंद कर दें, नहीं चलाए जब तक ठीक नहीं होता? So my suggestion is, if you're really passionate, and the passion is most important thing, because 2 तरह के entrepreneurs हैं आजकल. एक जो कि passionate हैं, they want to change the world, they want to come up with new ideas, new business वगैरह. दूसरे all they care about is कि भाई धंधेबाजी. I mean, all I need to do is basically I want to make more money, and I mean, Infosys मेरे को इतना पे करेगा या Evaluative इतना पे करेगा वगैरह. I want to make much more money. If I become a founder, I'll make much more money. Now, people should realize anyway 80% of the startups fail within the first 5 years. अभी तक तो अच्छा चल रहा है last 2-3 साल से सारे वर्ल्ड में. I mean, money has been very cheap because interest rates are so low. बट जहां पे मनी टाइट होगा तो यहाँ कई स्टार्टअप्स की मुश्किल आने लगेगी. So that's one thing everyone should keep in mind. In my view, don't do it for money, do it because you are passionate about it. Not because you want a title founder in your name, but because you think you have a new idea. The second thing I would strongly suggest is कि services companies ना खोलने के बदले, India is a very good place to start product companies. प्रोडक्ट कंपनीज में आपको इतने लोग नहीं चाहिए होते हैं. टिपिकली यू कैन डू अ मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, जैसे कहते हैं, बिल्कुल बेसिक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट. यू कैन क्रिएट अ प्रोडक्ट इन 6 months with 3 or 4 people. उससे ज्यादा की जरूरत नहीं होनी चाहिए. बहुत हुआ 5 लोग हो गए. That's already in 6 months. That's already 2.5 FTEs worth, 2.5 people for the whole year. उसमें एक तो आपको इतने लोग नहीं हायर करने पड़ेंगे. दूसरा है कि यू विल फिगर आउट एंड यू स्टार्ट वर्किंग विद क्लाइंट्स, विल फिगर आउट कि आपके प्रोडक्ट में क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है, बिकॉज दैट विल गिव यू अ प्रोडक्ट मार्केट फिट, एंड दैट विल ऑटोमेटिकली टेक यू अनदर 6 months. So up to 1 साल तक तो, I mean, you can make a product, and then even while growing, unlike services companies, product companies don't need that many technical people, because you're fundamentally building a product. I mean, we with almost 150 people, we built 4 product lines, and if you look at products, I mean, sub products तो वो तो बहुत ज़्यादा हैं. So that is what I would suggest very strongly. And I would also suggest don't get too carried away by becoming a $1 billion company, unicorn, and so on, because
आज आप यूनिकॉर्न हो, कल आप कुछ भी नहीं हो. I mean, I still remember the days of .com boom. One of my very good friends from MIT is a professor there, Tom Layton. So he started a company called Akamai. He's a well-known professor. Computer science में उसने बहुत काम किया है. Started a company called Akamai, which is probably around $15-16 billion in revenue. And I was running IBM India Research Lab. This was 1999. They had gone public. और उनकी valuation when they went public was $27 billion. So I wrote to Tom on email, Tom, congratulations, your valuation is more than the valuation of all airlines combined in the US. और वो mathematician है, वो computer science है, वो बिल्कुल समझा हुआ आदमी है. So वो वापस बस he says ... smile. अब वो क्या कहे? But I mean, the $27 billion became $270 million. उनका share actually delist होने वाला था within a matter of, within a matter of a month. They basically saved it. And then came the hard work. Then really came the hard work for these guys. And they pulled it off and it became a very good company, which is what I think Tom eventually wanted. I mean, he's not a kind of a guy that I can think कि जिसे 100 million या $1 billion की जरूरत है. वो वैसे भी वो जीन्स पहन के रहेगा, वो वैसे भी जीन्स पहन के रहेगा. उसके पास मैं अभी गया था बिफोर कोविड बात करने, तब भी हम कंप्यूटर साइंस बात कर रहे थे, नॉट अबाउट Akamai or Scry Analytics. So I think this is my own suggestion is come down to earth. Don't think about titles. I know titles are very important in India. अगर आपको शादी करनी है तो आपका क्या टाइटल है? I understand that too. आप यूएस में बैठकर भी पूरा इंडिया की पल्स पे नजर रखे हुए हैं. हाँ, वो तो मेरे को मजा आता है इंडिया भाई. एक तो इंडिया, आई मीन फॉर बेटर और वर्स, आप कुछ भी कहिए, इमोशनल हुए, मदरलैंड है. आई मीन, बट वी आल्सो Evaluator was mainly based in India. Scry Analytics, we have 2 centers in India. We have 1 center in San Jose in Silicon Valley. We are going to open another center in Dallas next year. But India में already हमारे गुड़गांव और हैदराबाद के centers हैं. So मैं कम से कम भी आधे घंटे इंडिया की न्यूज़ पढ़ता हूँ 5 newspapers में से. So Alok, what are the precursors to build a successful team? You have built a company, Evaluator. You are building a company, Scry Analytics. So fundamental precursor in any interesting endeavor, जो भी आप बहुत interesting काम करोगे, उसमें fundamental is कि passion होना चाहिए. कि you cannot, the team has to be extremely passionate about what it does. Because otherwise you will not be at the top. You will just be marginal. You will be maybe in the 50%, maybe in the 40% range. That's a culture that you need to create, is a culture of passion, ultimately. And the top, in my view, the top 20, agar aap product company ho, the top 20 people should be very passionate because they'll then create a culture. If you're a services company, I would say as many as 50 to 100 people, the first 50 to 100 people should be very passionate. With passion alone doesn't solve the problem. And I call it grit or perseverance to achieve passion. Khoob mehnat karo. I mean, don't worry about failures. Keep working at it. Keep thinking about Edison. Keep be optimistic. And that's a very important thing. Because you never know when you get hit. And you will be hit. I mean, ऐसा मेरे को अभी तक कोई भी सिलिकॉन वैली में नहीं दिखा है जिसने कंपनी बनाई है and there were not a few years which were down years for that person. Look, I have certain personal questions and I would like to see and learn from your experience as well. अब कुछ personal questions आपसे पूछता हूँ. आपका कोई failure story या regret है जो आप share कर सकते हैं हमारे साथ? एक तो मैंने आपको ऑलरेडी रिग्रेट बता दिया जो कि आई एम ट्राइंग टू फुलफिल. द सेकंड रिग्रेट वाज इज एन इंटरेस्टिंग वन. तो मैं तो कभी एंटरप्रेन्योर बनना नहीं चाहता था. जब मैं यूएस आया, आई वांटेड टू डू अ पीएचडी इन सुपर कंडक्टिविटी, सेमीकंडक्टर्स. अच्छा हुआ कि नहीं हुआ वो मेरा, क्योंकि सुपर कंडक्टिविटी मेरे को जॉब भी नहीं मिलती उस टाइम, बिकॉज एट दैट टाइम इन 1980 सुपर कंडक्टिविटी वाज बिग. In IBM. IBM was the Google of now, right? It was at the top of the world. IBM 360 was so well known and so taking the world over. So fortunately, I moved into algorithms thanks to a professor at Hopkins, who bhi Indian tha, Rao Kusaraju. And I wanted to be a professor. So I got a job offer from a university in the middle of nowhere in US called Urbana-Champaign, University of Illinois, Urbana-Champaign. It's a very well-known university, top 5 or 6 in computer science.
पर मिड वेस्ट में वैसे भी उस टाइम तो मैं वेजिटेरियन था, सो मिड वेस्ट में वेजिटेरियन मिलता नहीं है, मिड वेस्ट इज वेरी कोल्ड, सो मैं नहीं गया, मैंने IBM रिसर्च ज्वाइन कर ली, विच वाज आल्सो वेरी एकेडमिक इन नेचर, सो वेरी मच लाइक डूइंग रिसर्च एंड नथिंग एल्स। पर मैंने अपने बॉस को बता दिया था कि बॉस मैं 6 या 7 साल में छोड़ के चला जाऊंगा, मैं वो करूंगा टीचिंग और रिसर्च इन अ यूनिवर्सिटी। So I got a chance to teach at MIT. I mean, thanks to Tom Layton, जिसके बारे में बता रहा था, वो उस टाइम एक बुक लिख रहा था पैरेलल कंप्यूटिंग। सो उसने कहा मैं बुक लिख रहा हूँ तो मेरे बदले तुम पढ़ा दो 2 कोर्सेज, तुम्हारे को मैं अपने थोड़े 2 स्टूडेंट्स भी दे दूंगा, तुम उनके साथ रिसर्च कर लेना, यू एटलीस्ट यू विल गेट अ फील ऑफ कि हाउ डज टीचिंग, हाउ डज बीइंग अ प्रोफेसर लुक लाइक। सो मैं गया, मैंने पढ़ाया MIT में, ऑब्वियसली स्टूडेंट्स वर फैबुलस, दे वर जस्ट ब्रिलियंट। तो उस टाइम उन्होंने नोट्स लिखने शुरू करे, तो मैंने नोट्स देखे, बहुत बढ़िया थे। मैंने कहा अरे जो मैं पढ़ा रहा था उसका नाम है कॉम्प्यूटेशनल ज्योमेट्री, इट्स द बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर विजन। सो मैंने कहा कि इसके बारे में बुक लिखनी चाहिए, 1975 से बुक लिखी नहीं गई है। सो सिंस 1975 we haven't had a book, now it's 1989, lot of work has been done. सो मैंने पूरी की पूरी टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाई, उसके बाद पब्लिशर से बात करने लगा, स्प्रिंगर फरलैग से, मग्रॉ हिल से, तो वो दोनों बहुत इंटरेस्टेड थे क्योंकि बुक नहीं थी। सो उस टाइम स्प्रिंगर फरलैग तो मेरे को $20,000 इवन डाउन पेमेंट देने को तैयार था, विच इज वेरी कॉमन इन दिस बिजनेस, कि भाई एक बार आपको डाउन पेमेंट दे दी तो आप बैकआउट नहीं कर सकते, बिकॉज दे नो कि हाउ हार्ड इट इज टू राइट अ बुक। फॉर्चुनेटली मैंने डाउन पेमेंट नहीं ली, मैंने कहा कि नहीं, मेरे को लिखने दो, फिर लूंगा मैंने पहला चैप्टर लिखा, उसमें 120 घंटे लगे, मैंने उसे 18 से मल्टीप्लाई किया, मैंने ये तो पूरा का पूरा साल लग जाएगा, मैं रिसर्च क्या करूंगा। सो वो काफी सो मैंने वो बुक नहीं लिखी। So fortunately 3 साल बाद Stanford University professor wrote a book which is very good. So that was a very big regret for me, and I'm trying to fix that regret by writing a book now. As was in computational geometry is about artificial intelligence. मैं जब लोगों को कहता हूँ I graduated in 1984 with a PhD in machine learning AI, हर कोई कहता है you are a pioneer. तो मैं कहता हूँ नहीं गुरु, उसके पहले पूरी की पूरी एक जनरेशन निकल चुकी है, 30 साल हो चुके हैं उसे, 34 साल। So the name of the book is 100 Years of Artificial Intelligence, 1950 to 2049, Past, Present and Near Future. And I'm done with and this time I'm not gone to a publisher. I will only go after I'm done with the book, given my past experience. So I'm done with about 75% of the book. It has 15, 16 chapters, but I'm hoping to finish it end of April, early March, and hopefully get it published by end of September this year. That's my hope. Now, the fact is the book I'm writing is, 16 chapters, each chapter can in itself be a book. So I have to be very careful in how I present it. And the other thing is it is not being written for technical people. It's being written for product managers, MBAs, Master of Business Analytics, business owners, and generally a reference book. It was my एक भी equation नहीं है book में. Okay. आलोक, कभी आपको ऐसा लगा, आप सुबह उठे और आपको लगा कि अब बस, वो टाइम पे आप मोटिवेट कैसे करते हैं अपने आप को? हाँ, ये तो कई बार लगता है यार, ये तो अगर कोई कहे कि मेरे को कभी नहीं लगा तो आई डोंट थिंक वो बंदा सच बोल रहा है। ये तो स्पेशली यू गो थ्रू अप्स एंड डाउन्स, राइट? And especially if you don't take too much money from the VCs, if you take money, you have your own challenges. If you don't take money, bootstrap it, you have your own challenges. तो वो तो कई बार लगा है, ऐसा वो नहीं है। उसके बाद एक कॉफी या चाय पीने के बाद ये लगता है ठीक है यार, अब तो बस नहीं करते हैं। फिर लगता है कि अच्छा करेंगे क्या उसके बाद। तो मेरे को अपनी माँ की बड़ी बातें याद आती हैं, क्योंकि बहुत अकलमंद थी, पढ़ी लिखी नहीं थी उनका। she was born in 1922. It is very sad because उनके फादर तो एक्चुअली बहुत पढ़ाने में इंटरेस्टेड थे, बट नॉट हर ग्रैंडफादर, दादा। सो वो मेरे को बड़ी, उनकी काफी चीजें दिमाग में घूमती रहती हैं। तो मेरे दिमाग में यही आता है कि अगर नहीं करूंगा तो मैं क्या करूंगा। दिस इज व्हाट आई एंजॉय द मोस्ट, दिस इज व्हाट आई एम रीजनेबली गुड एट। तो मैं तो कुछ ना कुछ तो पागल हो जाऊंगा। सो उनका एक छोटा से स्टोरी याद आती है कि एक बाबा 80 साल का पीपल के नीचे गर्मी में बैठ के अपना कुर्ता फाड़ रहा था, फिर कुर्ता सी रहा था, फिर फाड़ रहा था, फिर सी रहा था। एक बच्चा आया 8-9 साल का, बाबा आप क्या कर रहे हो, कुर्ता फाड़ रहे हो, कुर्ता सी रहे हो?
तो कहता नहीं बेटा, तो मैं अगर नहीं करूंगा तो मैं औरों के कुर्ते फाड़ूंगा और सीऊंगा. So वही है, empty mind is devil's workshop, and that I think keeps me going कि यार यही तो मेरे को कुछ ज्यादा कुछ आता पता थोड़ी ना, यही तो मेरे को आता पता है, ये कुछ कर सकता हूँ इसमें. Okay, Alok, so we are about to end our show and we have a custom to ask life around blue, gray, black moment. What are your moments? कई बार रिजेक्ट हो गया. पहली बार यूएस में आया, बर्कली ने मेरे को पीएचडी में एडमिशन दे दिया. उन्होंने कहा तुम्हें रिसर्च असिस्टेंटशिप दे देंगे, फिर उन्होंने हायर नहीं किया. सो दैट वाज, आई मीन, असिस्टेंटशिप नहीं दी. सेकेंडली, सिमिलरली मैंने जब मैं खत्म कर रहा था पीएचडी तो मैंने एमआईटी में अप्लाई किया. उन्होंने कहा अभी तुम और थोड़े 2 साल पोस्ट डॉक करो. सो रिजेक्शन तो बहुत, आई मीन, इट्स अ वेरी कॉमन थिंग. आई थिंक रिजेक्शन, I mean, for the first 2 years in Scry Analytics, I mean, I would call it a failure. We are running 2 years behind because what we were trying did not work out. And so that was a pure failure. I mean, मेरी जिंदगी के 2 साल उसमें गायब हो गए उस फेलियर में. वो तो, I think, rejection, if you look at failure, कोई अगर फिर से कोई मेरे को कहे कि भाई मेरे जिंदगी में फेलियर नहीं हुआ, तो मैं यही कहूंगा यार तुम सच नहीं बोल रहे हो, तुम तो मजाक की बात कर रहे हो यार. आइदर तुमने पी रखी है तो मेरे को पिलाने वाले हो, बट आइदर वे आई डोंट बाय दैट. बिकॉज थिंक ऑफ अल्वा एडिसन, राइट? वो तो 1000 बार रिजेक्ट हो गया. All right, wonderful talking to you, Alok, and all of us who are watching Alok today. कुर्ते फाड़ने वाला एग्जाम्पल प्लीज डोंट फॉरगेट. कुछ ना कुछ करते रहिए, कुछ ना कुछ बनकर जरूर निकलेगा. आलोक हमारे सामने एक एग्जाम्पल है. थैंक यू सो मच. स्टे ट्यून्ड and wish you a great luck. Thank you so much, Alok, for taking time out. Sure. Thank you, Varun. Thanks for having me. Thank you. Bye-bye.